जब से मुंबई मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ है, it has been under a hot topic of discussion. A lot of people have been debating if it's even necessary. Now, whether you've picked a side or not, ये वीडियो जरूर देखिए. Let's take a quick look at something called EIA, which you must have heard a lot of times, or Environmental Impact Assessment. कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका EIA कंडक्ट किया जाता है. It basically helps the system decide whether this project is environmentally feasible or not. क्या वो आसपास के रहने वाले लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है? Is it affecting the flora and fauna of the site, etc., etc., etc. But there's a catch here. EIA is done only on the project's proposed site. That is, जहां पर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. लेकिन जिस जगह से उस प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, यानी कि सोर्स, वो उस EIA में इंक्लूड होता ही नहीं है. Point 2. EIA is often conducted by the company funding the project and not an autonomous body. This point may not really need any further explanation. मुंबई मेट्रो के केस में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है. There are mixed reviews and reactions to the Mumbai Metro project. While some are focused on the additional benefits this project will bring to the transportation of the city, some are agitated with the collateral damage it will bring alongside. Notwithstanding, इस प्रोजेक्ट का नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफी दूर तक ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया जा रहा है. One example. To meet the electricity demands of the metro station alone, power thermal power plant से आएगा, which will need a good, very good supply of coal. Firstly, not a clean source of energy. Secondly, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये ज्यादा कोल आएगा कहां से? Number 1, it produces fly ash. Fly ash is a fine powder which is a byproduct of burning coal in such power plants. It mixes with the air, water and soil and causes pollution and respiratory diseases. Not so surprisingly, after the power plant was built, यहाँ की agricultural produce and the number of fishes in the sea काफी decrease हो गई. Due to the settling of coal ash, fruit के sizes और soil की fertility भी decrease हो गई. फिलहाल दहानू पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, which is very much under the environmental limits, still under the environmental limits. But metro आ जाने से this will have to be raised and eventually will cross the limits. As per an IIT report, Dahanu will be severely impacted, very harshly in fact, because of the Mumbai Metro 3 project. क्या दहानू के इस इम्पैक्ट को EIA में इंक्लूड किया गया है? Not at all. ऑस्ट्रेलिया से दहानू कोल लाने के लिए we need a port, which is why the government has proposed the Vadhavan port. Perpendicular to the coastline, there will be a reclamation of 557 hectares with up to 18 meters of depth. Now, along with this, जो भी stones लाए जाएंगे for this project, वो आसपास की जगहों से import किया जाएगा, आसपास की जगहों से source किया जाएगा. Recently, Dahanu thermal power plant was transferred to Adani Industries. Some reports suggest that they are also trying to acquire the port, which will make the whole transportation process a lot easier. The port area is an old area for fishing. It is 2 kilometers of intertidal zone that has soft corals. Debris is going to be dumped there. यहाँ already 2000 fishing boats और काफी livelihood है. मेट्रो बिल्ड करने के लिए जो रोड्स और लैंड्स डिग किए जा रहे हैं, उसकी सॉइल कहाँ जाएगी? Apparently, it is being used to reclaim wetlands in places like Oran and or for the construction of coastal roads in Mumbai. आपके और हमारे लिए मेट्रो और कोस्टल रोड दो completely different projects होंगे, बट गवर्नमेंट के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स हैं. Easy way out to get rid of metro debris. To make new urban areas and land like NMSEZ of Ambani, wetlands having biodiversity, mangroves which protect land from floods and reduce air pollution are being destroyed. MMR's water carrying capacity is reducing. The debris may be coming from Mumbai Metro and is coming from the destruction of hills in Navi Mumbai. There is no mention whatsoever in the EIA of what will be done of the excavated debris. तो दहानू में जो ये इम्पैक्ट होगा या हो रहा है, क्या ये मुंबई मेट्रो के EIA रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन किया गया है? None of this has been accounted for in the EIA. मेट्रो बन जाने के बाद भी there is no guarantee that everything is going to be as rosy as it is painted. Due to climatic phenomena like El Nino and increasing global warming,
इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन्स और हैवी रेनफॉल के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, there are higher numbers of cyclones around the coast. Mumbai Metro is being built on reclaimed land. It is projected that 2050 तक these lands will be below the annual sea level, which means बारिश में फ्लडिंग एंड वाटर लॉगिंग की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज। ऐसी सिचुएशन में मेट्रो में वाटर लॉगिंग और पावर फेलियर के चांसेस काफी हाई हैं। इफ यू स्टक इनसाइड अ मेट्रो विद क्लोज्ड डोर्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सफोकेशन और डेथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। While we are not against the idea of public transportation, will it really take the cars off the road? In Delhi metro, less than 3% of car users really shifted to using the metro. मेट्रो में मोस्टली वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जो इनिशियली बसेस या ट्रेन्स में कम्यूट कर रहे थे, स्पेशली लोकल ट्रेन्स में। बट विद द कोस्टल प्रोजेक्ट, we're once again encouraging private car owners on the other side. Like we said, it's important that more public transportation is encouraged by the system. But EIA or Environmental Impact Assessment exists for a reason. The system needs to rethink what its sources are. There is always a cleaner alternative. With the world shifting to renewable energy, why do we need to keep stomping the grounds with old methods? क्या ये जरूरी है कि मुंबई मेट्रो की लाइन, उसकी नींव, दहानों के लोकल्स की लाइवलीहुड, while we are aware कि मुंबई की डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या एक ही सुविधा किसी और के लाइवलीहुड्स का लॉस बने? ये सही है। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट कभी नहीं हैं, लेकिन every act has an impact 10 years from now. Today, in the rush to provide relief, we are stabbing the future in its very back. And that future actually is our own. It belongs to us. So now that you know the complete picture, the story behind each and every raw material that is going to go in your Mumbai Metro, do your research, check the information again and pick your side wisely. And if you think we need to revise our ways, voice it.